क्या आपके टूथपेस्ट के अंदर नमक है? क्या आपका बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर है? विल आई यूज क्लोजअप तो उसके अंदर नमक तो नहीं है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड ही इज़ वे टू रिच, ही बॉट मी दिस। अभी मज़ा आएगा ना बीड़ू? पेलिंग चिना किंचिला आई डोंट नो द ट्रैक बट प्ले ट्रैक। पेलिंग चिना गिरने गाले मुन्ना। सो सिद्धार्थ बॉट मी दिस स्मार्टफोन, जो कि अपेरेंटली कल ही सेल पर आया है। कल नहीं मतलब तुम जब देख रहे होगे वीडियो तो परसों सेल पे आया होगा। एंड दिस इज द स्मार्टफोन जो कि वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट स्मार्टफोन है, जिसके अंदर 5G है। इट ऑल्सो हैज 108 मेगापिक्सल का कैमरा। फ्रिकिशली अमेजिंग स्मार्टफोन। दिस इज आई प्रेजेंट टू यू द Xiaomi का Mi 10i। Without wasting any more time, let's just go and have a look at the camera samples. Let's just unbox this thing and then we shall have a look at the camera samples. So yeah, let's do it. Normal YouTuber unboxing knife. Tech face, where is my IO shield? Inside the box we get this designed by Xiaomi का box. I don't know what is inside this, but I don't care. यहाँ पर अपना स्मार्टफोन. So okay, let's just rip it off. Oh my god, क्या चमक रहा है यार, dude. This phone is crazy for real, right? Camera angle number 2, just to have a look at what is inside the box. So let's just open it up. Dude. So you get this SIM ejector tool, and we also get some paperwork, and we get this, I guess it's a rear case, back cover. Let me pop in the smartphone and have a look at how does the smartphone looks inside of this thing, okay? What the heck is this, man? It's crazy for real, right? So that was the back cover. Now let's have a look at what is inside this box. So इसके अंदर we get 33 watt का power supply unit, 33 watt का power brick, and we also get a type C का cable. So there is that type C का cable, and nothing else is there inside the box. So that's it for this box. So yeah, pretty much all of it. So let's now have a look at some specs, and then we shall also move towards having a look at some camera samples. So yeah, there's that. Cool. Let's just do it. Specifications के बारे में बात करें तो this phone comes with the new Snapdragon 750G SoC. It has 120Hz का IPS LCD HDR10 का display. It comes in 3 different variants: 664, 6128 and 8128. Although they all do come with a hybrid memory card slot, so you can definitely go and buy yourself the 664 वाला version. हालांकि recommended होगा 6GB plus 128GB वाला version, because that is the most logical version out there, and that is exactly what we bought. It has Gorilla Glass 5 in both front and the rear, dual speakers, 4820 mAh की बैटरी, 33 watt की फास्ट चार्जिंग, UFS 2.2 का इंटरनल स्टोरेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैमरा के अंदर इसके अंदर है 108 मेगापिक्सल का मेन जाइगेंटिक शूटर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर. So that was the specifications. अब focus करते हैं on the pricing. I'll put the pricing on the screen right now. बाकी if you are a holder of the ICICI Bank के credit card / EMI पे अगर आपको लेना हो on your debit card, then you will get instant discount of 2000 rupees. And this was the test of the front camera. ये front camera से record हो रहा है. And yeah, I mean I'll just test it कि ये 60 FPS पे record हो रहा है कि नहीं हो रहा है. But I don't think it is 60 FPS. It's easily 30 FPS. I can see it, yeah, definitely 30 for sure. By the way, जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ना, उससे मैंने 2 सेल्फी ली और काफी अच्छी सेल्फी आई है, मतलब नो डाउट अबाउट दैट. सो सेल्फी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ. This is the sample recording of the Xiaomi Mi 10i camera. This is the rear camera, and this is how the video quality is. This is 1080p at 60 fps. I think everything is cool. Let's now have a look at some montages by this very camera, and then we shall also click some photographs and I'll show it to you guys. Okay? All cool. Okay.
हेलो, मेरा नाम फ्लोरेंस है. आई एम ट्राइंग टू एंटर इनटू दिस स्मार्टफोन वाला वर्ल्ड. इफ़ यू कैन सपोर्ट मी, प्लीज़ डू सपोर्ट मी. आई रियली नीड्स ऑल ऑफ योर सपोर्ट. एंड इसके अलावा इफ़ यू आर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम अमेजॉन, पेपर क्लिप से लेके प्लेन तक, वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, ग्रोसरीज तक, इफ़ यू आर बाइंग इट फ्रॉम अमेजॉन, प्लीज़ कंसिडर करें टू क्लिक ऑन माई अमेजॉन की अफिलिएट लिंक एंड देन बाय इट, बिकॉज दैट कुड हेल्प मी आउट टू सर्वाइव ऑन दिस चैनल एंड आई रियली वॉन्ट टू सर्वाइव. दैट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट ऑफ माइन. ठीक है, चलो अब चलते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन पार्ट ऑफ द वीडियो. यहाँ पर let me tell you this one thing. The smartphone is good, लेकिन it's not great. This was absolutely a realization for me कि ये जो स्मार्टफोन है ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं है. This is definitely a mediocre बोलने वाला था मैं, लेकिन let's just call it a mid-range smartphone, a good mid-range smartphone. ठीक है, गुड भी बोल रहे हैं, मेरे को सेकंड थॉट्स हो रहे हैं, लेकिन ठीक है. Let's save all of my thoughts for the main review of this video, of this smartphone. We'll make a proper camera review. We'll definitely make a proper gaming review. Whatever ideas that you have for this smartphone, please do drop them down below. I'll be more than happy to check them ideas out and then we'll make a video on those too. So ठीक है, ज़रूर comment करें. And इसके अलावा I'm going into the smartphone field too. So wish me luck, you know. There's that. मिलते हैं in the next one, guys. Take care. This was me, Johnny, signing out. Peace out. Bye bye. Bye bye.